short. लेकिन इसके अंदर जो है जो लॉन्ग और शॉर्ट के अलावा एक और वॉल की जो है किस्म है जिसको हम कहते हैं बहुत छोटी. And so when we learned the A vowels, which we call the A class vowels, last week we had 3 of them. जैसे हमने पिछली दफा जो क्लास ए के वॉल सीखे थे उसके 3 हमने किस्में देखी थी. We had the and they're all pronounced the same. और वो है हमने उसके अंदर जो आवाजें हैं वो है आ और आ. The very short, you should say quickly. जब हम कहते हैं कि very short तो उसका मतलब है कि हमने इसको जल्द कहना है. And if you'll notice, they can see this, right? You guys can see what I'm pointing at on the screen. आपको ये नजर आ रहा है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है. You'll notice that the short vowel, the one I highlighted, आप देखेंगे कि जो short vowel जो है जिसको highlight किया गया है. Now I've written it under a bait, but I wrote the bait in gray so that you know I'm talking about the vowel only, the black line. तो उसको जो है vowel को जो है वो हल्के जो है वो सरमई रंग में ऐसा लिखा गया है क्योंकि उसकी जगह पे कोई भी जो है वो कॉन्सोनेंट आ सकता है. जैसे अभी बेट है, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा जो बात कर रहे हैं वॉल की कर रहे हैं और वो ज्यादा हाईलाइटेड है, वो तकरीबन काला है. And the name of this vowel is patah. और इस जो वॉल का जो नाम है वो पातह है. Like Arabic fatah. जैसे वैसे ही है जैसे हम उर्दू में फतह कहते हैं. Now, the very short vowel, और जो बहुत छोटा जो वॉल है, you'll notice it's the same line, but it has 2 dots beside it. आप देखेंगे वो बिल्कुल सेम ही लाइन है लेकिन इसके साथ 2 डॉट्स हैं. And the 2 dots are telling you that's a very short vowel. 2 डॉट जो लगाए गए हैं उसके लगाने का मकसद ये है कि वो आपको बता रहे हैं कि ये बहुत शॉर्ट है. And so it's the combination of those 2, the line and the 2 dots, that make the very short A-class vowel. और ये जब इनको जब कंबाइन करते हैं एक छोटी लाइन को और 2 नुक्तों को, उसकी वजह से जो वॉल बनता है उसको हम कहते हैं कि बहुत उसकी आवाज जो है वो छोटी है. And the word for very short in Hebrew is this word chatef. और जब हम अबरानी ज़बान में किसी चीज को बहुत छोटा कहते हैं तो उसका जो लफ्ज़ है उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हतफ है. So we have a chatef patah, a patah, and then the long vowel is the kamaz. और हमारे पास है हतफ patah, patah और कमांस. Now we did all these vowels last week. और हमने ये तमाम के तमाम जो vowels हैं ये पिछली दफा देख लिए हुए हैं, पढ़ लिए. Now we're going to go on to the I vowels. अभी जो है हम I vowels के तरफ बढ़ेंगे. This is they. Now this is over the break of a page, so it doesn't display all at once. You can zoom up. I guess I could. Okay. Yeah. There you go. So again, we have very short, short, and long. और अभी देखें दोबारा हमारे पास जो है बहुत छोटा छोटा और जो लंबा जो है वो वॉल आया है. And you'll notice that the very short has the 2 dots going on again. आप दोबारा देखें जो बहुत छोटा है इसके साथ 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं. And then it's got the short vowel beside it, which we're going to look at now. और उसके बाद जो 3 नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं वो शॉर्ट वॉल के लिए हैं. That's this one. और ये अभी जो हाईलाइट किया ये इसके लिए है. Now, what happened in Hebrew and in Aramaic and in Phoenician and in Moabite, all the Northwest Semitic languages, is the I-class vowels developed an E variable. और जब हम देखते हैं जो नॉर्थ वेस्ट की जो सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम देखते हैं अरामिक के अंदर, अबरानी के अंदर और उसके बाद फिनिशियंस के अंदर जो है
तो वो तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो इसकी जो आवाज है वो तकरीबन ई की तरह है, और सॉरी आई है, उसकी जो आवाज है वो आई है, और उसके बाद इसकी जो वेरिएशन है जैसे पिछली दफा हमने देखी थी उसकी जो किस्में हैं जो वो 3 थी, यहाँ पर तकरीबन 5 है. So this one is just a short, in English we pronounce the name of this letter I. It's an I-class vowel. It is pronounced it. It's a single dot beneath whatever consonant it's with. और ये किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे जब एक नुक्ता लग जाएगा तो इसको जो है हम आई बॉल कहेंगे, और इसके ई का जो है वो आवाज है. And we're going to pronounce it. और इसको प्रोनाउंस करके ए. The same sign can also be the long vowel. लेकिन इसी तरीके से ये जो सेम जो एक नुक्ता है ये लंबे के लिए भी इस्तेमाल होता है, लंबी आवाज के लिए भी. And when it's the long vowel, it's pronounced E. और जब इसको लंबी आवाज होगी वो ई की होगी, लेकिन जब शॉर्ट होगी तो वो ए. So, I versus E. ओके, जो शॉर्ट है वो ए है और जो लंबी है वो ई है. Now, when it's long, they usually write a yod after it. जब भी ये लंबी होगी आवाज तो उसके फौरन बाद जो है वो योद जो एक जो है कॉन्सोनेंट है वो आएगा. And so, if it's long, it's usually written here yod, and if it's short, it's just the hirik. The name of the vowel is hirik. That's this word. The name of the vowel, hirik. और जो ये और जो इस जो वाउल का जो नाम है वो हेरिक है. Okay. Also, the E-class variants, or the E variants, not E-class, don't say class. The E variants are this, the 3 dots. और जो इसके अलावा जो ई की जो किस्में हैं उसके अंदर एक 3 डॉट्स की किस्म है. It's pronounced sagol. और इसको हम सगोल कहते हैं. That's the name. और इसका जो नाम है जब 3 नुक्ते होंगे तो उसका जो नाम है वो सगोल है. The 3 dots are pronounced eh. और इसका जो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ए का आवाज So, निकालेंगे. what's the difference between the short I and the short E? आप इन दोनों के दरमियान जो है वो आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? In English, it's the difference between the word pit and pet. तो इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंस है ऐसे ही जैसे आप पिट कहते हैं और पेट कहते हैं. You know, those are 2 different words in English. तो आपको पता है कि 2 मुख्तलिफ लफ्ज हैं लेकिन आप उनकी आवाजें देखें वो फर्क है. And so, it's important that you learn to pronounce the distinction. इसलिए आपको जो है जरूरी है कि आपकी जो इसकी जो आवाजें हैं उसको सीखें. So it's I versus eh. ये ऐसे ही है जैसे ई और ए. All right, and then the long vowels, we already talked about the hirik with the yod, which we call hirik yod cleverly. और उसके बाद जो है हमने लंबे के लिए ऑलरेडी लंबी आवाज के लिए पहले ही हमने सीख लिया है जो हेरिक है, लेकिन ये लॉन्ग हेरिक है. You can go hirik yod. और उसके बाद हेरिक के बाद हमेशा जो है वो योद लगता है. The other long vowel is 2 dots side by side. और इसके बाद जो दूसरा जो वॉल है जो लंबा है उसके अंदर 2 नुक्ते हैं. The name of the vowel is seire, और इसका जो नाम है वो सेरे है. and it's pronounced A. और इसको ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे. So if we go through the vowels in English words, the sagol is pronounced E as in pet. और अगर हम इन्हीं वॉल्स को जो है इंग्लिश के अल्फाज के अंदर इनका सिर्फ आवाज देख रहे हैं किस तरह की आवाज है वो देखना चाहें तो सगोल जो 3 नुक्तों की तरह है इसकी आवाज ऐसे होगी जैसे पैट के अंदर ई की आवाज है. The short I, the hirik, is pit, it. और जो शॉर्ट आई है और जिसका नाम हेरिक है इसको हम पिट. And the sere, which is a long vowel, is the E and they. और जो सेरे है जो कि लंबा जो है वॉल है वो भी ई की वजह जैसे दे. And then the hirik yod, the long I, is
E. So this is machine. It's that I right there. और जब हम देखते हैं जो हेडिक जो लंबा है जिसके बाद योद भी आता है तो इसको जब इंग्लिश में इसकी आवाज सीखेंगे हम तो वो होगा थोड़ी लंबी होगी जैसे मशीन तो इसके अंदर जो आई की आवाज आपको आएगी ई की. So there's only one very short vowel. लेकिन जब हम बहुत छोटे आवाज की बात करेंगे तो वो सिर्फ एक ही है For the I vowel. और इसको हम आई वॉल बोल. And that's this sagol और ये सगोल with the 2 dots written beside it. और उसके साथ जो 2 डॉट्स हैं जो आपको याद होगा तो हैतफ के लिए जो इस्तेमाल होता है. And it's called Chatef Sagol. और इसका नाम है इसका हैतफ सगोल. And it's also like the sagol, but just very quickly. और ये बहुत एक छोटी आवाज होगी जैसे की है और इंग्लिश में इसको एनएफ के लिए. Now we went over these consonants last week. और हमने जो है ये कुछ कॉन्सोनेंट्स जो है पिछली दफा देखे थे. But we did it as we came across them. So now we'll do them in order. This is Hebrew and Aramaic. और आप ये देखें कि जब भी हम जो है हिब्रू के अब्रानी के और अरामी के कॉन्सोनेंट देखेंगे तो वो एक जैसे ही है. और पिछली दफा हमने इनको जो था वो लफ्जों के अंदर जुमलों के अंदर देखा था. आज जो है हम इसको वैसे सीखेंगे. And you remember 3 of these are written differently at the end of the word. लेकिन आपको शायद याद हो कि आपको बताया था कि ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जब वो किसी लफ्ज के आखिर में आते हैं तो वो मुख्तलिफ तरीके से लिखे जाते हैं. Tat, which, Arabic, you know how to make that sound. और tet. And then yod, which is just ya. और yod जैसे या. And then the kaf, when it has the dot, the dagesh, it's a hard sound. It's ka. और जब भी काफ ये आपके सामने लिखा हुआ है ये हिब्रू का काफ है या अरामी का काफ है. इसके अंदर जब एक नुक्ता लगा और जिसको डागिश कहते हैं तो ये जो है काफ का साउंड देगा. Without it, it's kha. लेकिन जब इसके अंदर जो है वो नुक्ता ना हो ये तो इसको खा की आवाज देंगे. Now, it's important that you pronounce them in the same place in your mouth. It's just that on this one, you'll blow across it as you say it. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ही तरीके से तकरीबन आप इसको बोलते हैं लेकिन जो ख है उसको थोड़ा सा हम जो है उसको जैसे हवा बाहर मुंह से निकाल ले तो ऐसे बोलते हैं. So, ka, kha. तो ये का और ख है. We don't want it in your throat because that would make it a het. आपने अपना गला नहीं इस्तेमाल करना सिर्फ मुंह के अंदर से आवाज निकालने का और ख. And by the way, the form at the end of the word also has the same 2 different pronunciations. लेकिन जब हम इसके आखिर के लफ्ज में जाएंगे तो इसकी भी 2 तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. It'll have the dot if it's hard, and if it doesn't, it's the technical term is aspirated. So. और इसी तरीके से जब इसके अंदर जो है वो दागिश होगा तो ये ज्यादा जो है वो थोड़ा हार्ड तरीके से बोला जाएगा. This is just L, it's lamed. और ये आगे जो है वो L है लामिद का. So la. और ला. And then mem. It's just और फिर मेम है जैसे मा. And noon. Pronounce it n. और नून जो है वो ना. We call that a nasal because you kind of go through your nose to say it. तो जब नून की आवाज जो है हम नाक से निकालते हैं. Samic, simple S. और जब सामिक बोलेंगे तो S है. And you all have iron in your own language, so iron. और आयन. All right. The vowels will be the harder part. जो vowels हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. And so I want to practice for a little bit. और आए हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें. And then we're going to go over the last vowels, and then we're going to look at names again and practice pronouncing it. और हम दोबारा जो है जो आखिरी जो vowels हैं उसकी तरफ जाएंगे और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसको बोलने की. Now, in these practice exercises, I'm including the vowels that we covered last week. और इस प्रैक्टिस के अंदर
हमारे पास वो वाले वॉल्स भी हैं जो हमने पिछली दफा पढ़े. Let's pronounce that one. I'm going to blow it up a little bit, even though they have it in front of me. आपके सामने ये जो है लफ्ज आप इसको बोलने की कोशिश करें. All right. You pronounce it to yourself, and then I'll pronounce it, and we'll see if you got it right. आप इसको प्रोनाउंस करें, चाहे माइक ना खोलें, उसके बाद हम दोबारा बोलेंगे. तो अगर आप ठीक बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप उसको जो है वो ठीक करें. So go ahead. Ta. इसको बोलें ता. How many got it right? कितने ने इसको ता का हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने इसको ता पढ़ा. Tav. ये तव है. कितनों ने इसको तव पढ़ा. अब देखिए बिल्कुल जो है वो जैसे हमारे उर्दू में तोता है, ये तोय की आवाज है. ठीक है, तो तव. Okay. Next one. Say it to yourself. अब जो नेक्स्ट है अपने आप को बोल रहे हैं इसको Ta. टे. Say it to yourself. Tem. टेन. चलिए इसकी प्रैक्टिस करें. जो हाईलाइट है उसको अपने जहन में बोलें. Tain. थेन. Tem. टेम. Tain. टेन. So it's a versus a. और आप देखिए पहले ए की आवाज है और उसके बाद जो आवाज है जब उसके नीचे जब दो नुक्ते हैं तो ए की होगी. So tem. Tain. तो टेन और टेन. Not ten. Tain. टेन. Give us more of an A sound. Tis. टिस. Eh. टे. Technically, the here can either this could be this word could be pronounced tis or tease. और ये जो लफ्ज है इसको हम टिस या टीस पढ़ेंगे Because the here is both a long vowel and a short vowel. क्योंकि ये जो हियरिक है अभी हमने देखा था इसकी आवाज छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है. Now, usually they'll put a yod in there if it's long, but not always. लेकिन ज्यादातर जो है जब इसकी आवाज उन्होंने लंबी करनी हो तो योद जो है वो इसके दरमियान लगाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं. Now, let's do this one. Yil यल or yield. या इसको हम यील भी पढ़ सकते हैं. Yes. नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है यस Or yeast. यस. Yem. नेक्स्ट जो है वो यम. Remember, yod is a y sound on the front. योद जो है वो यह का साउंड है. And don't make it an aleph on the front. It's not just eh, it's yeah. और इसको अलिफ के साथ आप इसको जो मिक्स ना करें. जो अलिफ जो है वो क्या है लेकिन योद जो है वो यह का साउंड है. Yin येन or yin. और ईन. Yays. येस.
Yig Yeg, or Yig. या इसको yig भी पढ़ेंगे. Yav, Yav, Yad, Yad. now we're going to do whole words. अभी जो है हमारे पास पूरा एक लफ्ज है जिसको हम पढ़ेंगे. Do you see that little bracket thing, that little arrow above the bait? आपके ऊपर वो जो है आपको एक जो तीर का जो निशान नजर आ रहा है. In Hebrew and in Aramaic, the accent or the stress is on the end of the word unless we have a sign saying otherwise. जब भी हम अरामिक या अरामी या जो अब्रानी जुबान देखते हैं पढ़ते हैं तो हमेशा जो आवाज है वो आखिरी जो लफ्ज होता है, आखिरी जो होता है लफ्ज उसके ऊपर ज्यादा होती है. लेकिन जब ये वाला जो तीर का निशान हो तो फिर उस जो लफ्ज है उसके ऊपर ज्यादा आवाज हो. So because we have that little arrow, that little accent mark, और हमारे पास क्योंकि ये जो है एक्सेंट मार्क है इसको कहते हैं. this is pronounced Baal. इसको हम पढ़ेंगे बआल. Two sounds, the vowels are the same. और आप देखिए जो वॉल्स की वजह से दो दफा ए का साउंड है, Ah, सॉरी दो दफा आ का साउंड है. so Baal. बआल. This word does not have an accent mark. और यहाँ पर देखिए कोई भी एक्सेंट मार्क नहीं है, So the accent will be on the end. तो इसका जो आवाज है ज्यादा वो आखिरी जो है इसका लफ्ज उसके ऊपर आएगी. Now these two vowels are pronounced the same. और ये दोनों जो वॉल्स हैं ये एक ही तरह से प्रोनाउंस होते हैं. Ab, Bav, Abav. और ये इसको पढ़ेंगे अबाव. So above, अबाव. accent on the end. Again, two vowels. दोबारा दो वॉल्स हैं. Simech. सीमेख. Don't give me an E. It's a serif. I need A. Simech. सीमेख. I like to make a cake. सीमेख. सीमेख. No dagesh, so it's a sound. इसके अंदर कोई दागिश या नुक्ता नजर नहीं आ रहा तो ये ख का साउंड होगा. Melich. और ये है मेलेख. Adam. अदाम. Remember, this letter and this letter, this consonant are the same. आप ये याद रखें कि जो हाईलाइट किया हुआ है और जो इससे आगे वाले लफ्ज का जो आखिरी जो हिस्सा है वो एक ही है. This is just the form at the end of the word. और ये वो फॉर्म है जो उसके आखिरी जो वर्ड के अंदर आई है. I don't know why it's hard. So like this. Name. नहीं. Those are both the same consonant. और ये दोनों जो है ये नून है, दोनों एक ही कॉन्सोनेंट है. Okay, it's just the final form of the noun. लेकिन जब जो नून आखिर में लिखा जाता है किसी भी लफ्ज के तो उसको नीचे तक लेके करते हैं. This consonant and this consonant are the same. इसी तरीके से ये जो कॉन्सोनेंट हाईलाइट किया है जो आगे वाला लफ्ज हम पढ़ रहे हैं वो एक ही है. That is the kaf. और इसको हम काफ बोलते हैं. Has the dagesh. और इसके अंदर दागिश है. So, and there's our vowel. और नीचे दो वॉल जो दो नीचे नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं. Kale. इसको हम पढ़ेंगे खेल. Kim. और ये है किम. All right, we're doing well. आप लोग जो है वो सब ठीक कर रहे हैं. Let's practice on some names. अभी हम जो है कुछ नामों के ऊपर जो है हम प्रैक्टिस करेंगे.
Okay, would you like to break now? We are about halfway through. Well, why don't we tell them we're going to take a break here and then we're going to practice next. We're not doing that. We're going to stop sharing. So. All right, can people see this? आप सबको ये नजर आ रहे हैं अल्फाज? Very good. Okay. So we're going to practice some names. And again, remember, we're going to have some extra marks on these words because they're the cantillation marks telling them how they're to chant the text. And we're not going to chant it, we're just reading it. और जो हम यहाँ पर जो अभी जिसकी प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क भी मौजूद है जिसकी वजह से जैसे इसको तकरीबन गाकर पढ़ा जाता था तो लेकिन हम यहाँ पर जो है सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं. So this word, there's you recognize this vowel. आप जैसे ये जो लफ्ज है जो हाईलाइट हुआ है आपको हाईलाइट हुए नजर आता है जब इसको ब्लू कलर का हाईलाइट होता है. चलिए ठीक है. But the dot above the noon we have not learned yet. आपने जो है इस लफ्ज के अंदर जो तीन आपको ऊपर नुक्ते नजर आ रहे हैं वो आपने नहीं सीखे. It's the last group of vowels that we have to learn. But I'll just tell you right now what it is. It's an O sound. और ये आखिरी जो ग्रुप है जो वावल्स का उसके अंदर हम सीखेंगे लेकिन अभी जो मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ ये ओ का साउंड. And it's just that one dot. और सिर्फ एक जो डॉट है. The two dots are an accent mark. जो दूसरे दो तीन हैं देखें और ये तीन एक तकरीबन एल की शेप जो है वो बना रहे हैं. जो एक जो डॉट है आपको जो आपके दाहिनी तरफ नजर आ रहा है वो ओ का साउंड है लेकिन जो दो डॉट जो ऊपर नीचे जो दो नुक्ते हैं वो एक्सेंट मार्क. So this is what it looks like without the accent mark. लेकिन अगर आप एक्सेंट मार्क के बगैर देखते हैं तो ये दूसरी तरफ आपको जो दरमियान में जो नजर आ रहा है ये इस तरीके से. This is the Aramaic version. ये जो है अभी जो दरमियान में है वो अरामी जुबान है. So this is pronounced Noah. इसको हम बोलेंगे नोआ. Also Noah. और जो अब्रानी में भी नोआ. And in Greek, लेकिन जब हम ग्रीक के अंदर जाएंगे that it's the omega. We did talk about that last time. और ये ओमेगा है इसका It's the great O. और इसको हम बड़े ओ की बड़ा ओ कहते हैं. And this is pronounced Noah. तो इसको जो है पढ़ेंगे नोआ. And they would actually just say Noah. और इसको हम नोआ जैसे वो कहते हैं. This name, who is Noah? आप सबको पता है नोआ कौन है? Oh, what is Noah in Pakistan? So Noah, they know who Noah is. आप सबको पता है नोआ कौन था? नूह का पता सबको? Yes, with the ark and the flood. ठीक है ना वो जो जिसने कश्ती बनाई और सैलाब आया उसका जो नाम है नोआ. Yes, his name means rest. और जो नोहा का जो लफ्ज है उसका जो मतलब है वो है आराम. Then we have his son, Ham. और फिर हम उसका बेटा देखते हैं जिसका नाम है हाम. Be sure to get it in your throat. Ham. और इसका जो आवाज आपने अपने गले से निकालनी है हाम. It's not a hey, which is this letter. और ये हे नहीं है. It's not that. ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है वो वाला नहीं है. It's this one in your throat. Ham. और ये खम. Okay, that's the Aramaic. Hebrew looks just like it, but it has an accent mark. और ये अरामिक में है, अरामी में है, लेकिन हिब्रू में भी ऐसा ही है, लेकिन इसके नीचे आप देख रहे हैं ये उल्टे एल की तरह का एक एक्सेंट मार्क है. Also pronounced Ham. इसको भी हम हाम ही पढ़ेंगे. Oh, I skipped the name. Okay, we'll go back to this. The blue highlight.
और अभी आप दरमियान में देखें जो ब्लू हाईलाइट है shame. तो इसका ये है just shame. And we went over the concepts last time, but we will do it thoroughly. But that sign with the dot on the right is pronounced sh. और ये जो साइन जो पहला आपको जो लफ्ज है जो इसको शी या शा जो है पढ़ेंगे. And then the vowel we just studied, and then the mem. So shame. और हमने वो वॉल्स हैं जो भी देखे हैं और हमने देखा आखिरी जो मीम की जो शक्ल है बस वो आपको नजर आती है shame. And same name, but with an accent mark. और इसी तरह जो अबरानी के अंदर वही नाम है लेकिन इसके ऊपर एक एक्सेंट मार्क है. Shame. Shame. And in Greek, they wrote it. They don't have. Greek doesn't have a sh sound. अब अगर हम यूनानी ज़बान में जाते हैं तो उनके पास श का साउंड ही नहीं है. So they substitute sa. तो उसकी जगह पर उन्होंने सा इस्तेमाल किया. So that's sigma, eta, mu, तो ये हुआ सिग्मा एटा मू. and it's pronounced same. इसको हम पढ़ेंगे सेम. There's hand, ham, we just did. और अभी हमने जो है हम जो है वो सीखा. Here it is in Greek, ki, alpha, mu, और जो ग्रीक के अंदर ये की अल्फा और मू है ham. तो इसको हम बोलेंगे हम. Does everybody see that word? I mean, that letter that I've highlighted. तो ये जो लेटर है जिसको हाईलाइट किया आप सबको नजर आ रहा है दरमियान के अंदर. A vav at the beginning of a word, and the vowel will change. But a vav at the beginning of the word is often a conjunction meaning and. Arabic wa. और जब भी एक बॉल जो है जो हम किसी भी लफ्ज के शुरू में लगा देंगे तो वो एक उसका जो साथ जो कंजंक्शन जो वर्ड मीनिंग है वो बना देगा. And this is va in Hebrew. और जो अबरानी है ये उसके अंदर ये वाह है. And in Aramaic, it's va. और अरामी के अंदर ये वाह है. The vowel will change, though, depending on the context. लेकिन जो वाव है वो चेंज होगा जिस तरह का जो कंटेंट है उसके मुताबिक. That is the normal form of it. और ये जो है इसकी नॉर्मल फॉर्म है जो भी हाईलाइट की है. And the two dots here would be pronounced to be v. और ये जो दो जो डॉट है इसको भ का साउंड देंगे तो ये व हो गया. This is va. और ये जो है जो जब आपके नीचे जो है जकमार्स राइट. Yeah. जब कमार्स होगा टी की तरह जो है वो लंबा जो है वो साउंड देगा. Pronounce the syllable form va. और इसको हम पढ़ेंगे वाह. All right, here's the actual name. और आखिर में जो है वो जो नाम है वो हाईलाइट हुआ है. Yafat. और ये है याफात. The Hebrew has a slightly different pronunciation. That's the Aramaic. Now this is the Hebrew, same name. जो दरमियान में है वो अरामी है लेकिन जो अबरानी है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसकी आवाज. And you got the conjunction on the front. उसका जो कंजंक्शन है वो शुरू में है. And then here's the name. उसके बाद जो है वो नाम है. And you see this extra mark, that accent mark? और आपको यहाँ पर एक एक्सेंट मार्क भी नजर आ रहा है. So the accent's on the front. So it's Yafet. तो उसका जो एक्सेंट है जहाँ पे एक्सेंट मार्क होगा वो वहीं पे होगा. तो हम इसको पढ़ेंगे याफेट. Greek. और अब हम ग्रीक के अंदर जाते हैं. Iota. तो ये इयोटा है. Alpha. अल्फा. Phi. फी. Epsilon. एप्सिलॉन. Theta. थीटा. Yafet. याफेट. Yafet. याफेट. All right. Okay. More names. Remember this name that we just looked at right there? आपको याद है कि यही वाला नाम जो अभी आपने देखा था
here's that same name in a different context, and its pronunciation has changed. और ये वही नाम है जो एक मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ है. And this is Yefeth. और यहाँ पे हम इसको Excuse पढ़ेंगे. me, Yefet. तो इसको पढ़ेंगे Yefet. Now, Aramaic, Yaphet. जब अरामी में पढ़ेंगे तो याफत होगा. So they have two pataks, Yaphet. Hebrew has two segols, Yefet. और अगर आप अरामी देखें तो उसके तो दो पटाक हैं, जो एक लाइन है उसको पटाक बोलते हैं. लेकिन जब आप उसको अब्रानी में देखते हैं तो उसके नीचे आपको दो जो है वो सगोल, जो तीन नुक्ते हैं उसको सगोल बोलते हैं. Same name. लेकिन वो एक ही नाम है. And in the Greek, it just stayed Yaphet. और जो ग्रीक है उसके अंदर ये याफत ही रहेगा. Okay. Another name, और एक और नाम Gomar. वो है गोमार. Oh, sorry, Gomar. Accents on the front. They don't, इसका जो एक्सेंट है वो शुरू में होगा तो ये गोमार. because that's the way it is in the Hebrew. और जो अब्रानी है उसके अंदर भी एक्सेंट शुरू में है. See, a mark we haven't learned yet, that's an accent mark. और ये जो मार्क आपको नजर आ रहा है, ये इसका भी पढ़ा नहीं लेकिन वो हमें नजर आ रहा है, तो ये एक्सेंट मार्क है. Gomer. ये गोमेर है. All right. I want to go back now, and we're going to learn the last vowels and the rest of the consonants for Hebrew and Aramaic, and we will have covered them all. और आप अभी हम दोबारा जो है हम वापस जाएंगे और हम जो है वो देखेंगे जो तीसरी जो किस्म है वॉल की तीसरी जो क्लास है वो सब देखेंगे और उसके बाद दोबारा कॉन्सोनेंट जो है वो पढ़ेंगे. That'll make a little more sense when we read that. We're running into these other vowels, so might as well just go. So this is the last class of vowels, the U class. और हमने पहले जो है दो क्लासें पढ़ी, लेकिन ये जो है आखिरी जो क्लास है वो U क्लास है. And like we saw with the I class, there's been two values developed. हमने जब I क्लास जिससे पहले पढ़ी तो हमने ये देखा था कि जो है उसकी जो दो मजीद जो है वो किस्में हुई. The original U value, तो जो ओरिजिनल है वो U की वैल्यू है, and then it got colored into an O value. लेकिन वो जो U की आवाज जो है वो O में तब्दील हो गई. All right, so here is the short U class vowel. और ये आपको जो हाईलाइट हुआ है ये शॉर्ट U क्लास वॉल. The name of it is kibbutz, और इसका जो नाम है वो कबूस है. and this sound is U. और इसका जो साउंड है वो U है. You could even go but it's usually U. और आप इसको भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये U की आवाज देता है. And here it is as a long vowel, और यहाँ आगे जो है वो एक लॉन्ग वॉल है and it's written exactly the same. और ये वैसे बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाता है. But like in Arabic, and as we saw with the Heuric, they often write a consonant after it to tell you that it's long. लेकिन जो अरबी के अंदर भी और जो है अब्रानी के अंदर भी इस वॉल के फौरन बाद एक कॉन्सोनेंट लगाया जाता है ताकि इसका जो साउंड है वो थोड़ा लंबा हो और वो उसकी पहचान है. There'll be a vav usually when it's long. तो ये वाव होगा जब ये लंबा होगा. It's still pronounced U. और लेकिन इसकी जो आवाज है वो ऊ ही है. U, U. और ऊ और उसका नाम कबूस. Now you'll notice over here, I said the short one should be the U as in put, the sound. अभी जैसे हम इसकी आवाज अगर इंग्लिश की किसी लफ्ज के अंदर देखें तो ये ऊ की आवाज है और इसका फुट जो है वो है. And you'll hear that sometimes, but usually they're pronounced the same. और ये आप इसको जो पढ़ेंगे भी जब बनाएंगे इसको काफी देखेंगे, लेकिन ये एक ही तरह प्रोनाउंस होता है. Now the next sign, this one, लेकिन इससे आगे जो साइन है is confusing ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, because that is the same sign for the long A vowel. क्योंकि यही वाला जो साइन है वो लंबे ए के लिए भी है. These dots and dashes that indicate the vowels,
और ये डॉट और डैशेस जो है जो इंडिकेट करती हैं वॉल्स को were invented by scribes during the Islamic period. और जब इस्लामी जो दौर आया उस वक्त जो लोग जुबान को लिखते थे उन्होंने आवाज को जो है पहचानने के लिए किसी लफ्ज की आवाज जो है उसको किस तरीके से जो है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरीके से की जाए तो उन्होंने इसका जो है वो इस्तेमाल शुरू किया. Now, they weren't Muslim scribes. It was just during the period of Muslim control. आप ये ना समझिएगा कि वो मुसलमान जो थे लिखने वाले थे स्क्राइब्स थे लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस दौर में हुआ. So from 600 to 1000 AD. और ये तकरीबन 600 से लेके 1000 जो है वो जो है AD में हुआ. So this is half a millennium after the time of Jesus. तो ये तकरीबन मसीह से तकरीबन जो है और मसीह के अगर हम लेके आने जो मसीह से तकरीबन 500 साल बाद ये शुरू. Now, they're not inventing the vowels, they're inventing a way of writing the vowels. और वो उस वक्त जो है उन्होंने वॉल्स को जो है वो नहीं बनाया लेकिन उन्होंने उसका लिखने का जो तरीका था वो आजाद किया. And the reason I bring that up is they obviously heard the same sound for the short U-class vowel as they did for the long A vowel. और ये हमेशा जो है जैसे जो है यू क्लास वॉल की जो आवाज शॉर्ट की निकालते थे इसी तरीके से जैसे वो जो है लंबे ए की आवाज निकालते. When we, well, I'll just go back to this. मैं आपको दोबारा वापस जाकर दिखाता हूँ. So when we learned this vowel, आपने ये वॉल जो है वो पढ़ा. I said it's the A in tall. तो हमने ये कहा कि ए का साउंड है लेकिन जैसे टॉल कहते हैं. Now remember that word tall. और आप ये याद रखें आगे जो लफ्ज है टॉल जो है आपने ज़हन में रखना है तो हम आगे इसको जो है वो सीखेंगे कि कैसे है. And then I tell you this same sign is the O in pot. लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सेम जो है कमांड्स का जो साइन है एक ही तरह का लेकिन इसकी जो आवाज है वो तब्दील हो गई है. वो अब ए की आवाज नहीं रही अब वो ओ की आवाज है. In the word pot. जैसे लफ्ज पॉट है. Now the funny thing is in English tall and pot have the same vowel. और आप ये देखें कि जो इंग्लिश के अंदर जो है वो जो है टॉल और पॉट जो है उसकी तकरीबन जो है एक ही वॉल है. We write one with an A and one with an O. सिर्फ हम ये करते हैं कि एक हम जो है ए से लिखते हैं और दूसरा जो है हम ओ से लिखते हैं. So this sound is the same sound. At least the scribes who invented the system, they heard the same sound. और जब स्क्राइब्स ने जिन्होंने इसकी आवाज को बेहतर करने के लिए ये पूरा सिस्टम जो डेवलप किया तो उन्होंने ये आवाज जो है ये वही रखी. So in pronouncing today, we tend to pronounce that O. और जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं टुडे तो हम ओ प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं. And when it's the long A, we pronounce it ah. और जब एक लंबा ए हो तो हम इसको आ पढ़ते हैं. So we make a difference, तो आप ये a distinction. आपको एक डिफरेंस नजर आएगा जब लंबा ए की आवाज निकालेंगे तो वो होगा आ लेकिन जब ओ की आवाज निकालेंगे तो वो जो है वो शॉर्ट होगा. Yeah. So we will learn it when you see one of these, you're going to assume it's the long A. जब आप इस तरह देखें इसको तो आपने अपने ज़हन में रखना है The ah sound. जो ये लॉन्ग ए है जब भी लॉन्ग ए का साउंड होगा तो आ का साउंड निकालेगा. And we will learn there's two contexts where this becomes the short O sound. और हम ये देखेंगे कि दो जो कॉन्टेंट्स है जहाँ पर ये जो है शॉर्ट ओ का जो है वो साउंड रहता है. All right. So the kibbutz, which is an U sound. अभी हमने देखा जो किबूट्स है उसका ऊ का साउंड है. This one is called a kamat chatuf, the short O
kamat. और इसको हम बोलते हैं कमात धातु, जिसका मतलब है एक छोटा ओ साउंड, स्मॉल ओ साउंड। Kibbutz again, u. और कबूस से है वो दोबारा। And then this vowel that we saw in the name Noah is called a holem. और ये जो वॉल जो हमने नोहा के नाम के अंदर देखा, जो ऊपर एक जो है वो नुक्ता लगा हुआ है, इसको हम होलम बोलते हैं। And it's pronounced O. और इसको हम ओ पढ़ेंगे। Now, we're not going to memorize the names of these vowels. आपको इनके नाम जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को सिखाएं तो फिर आपको इनके नाम पता होने चाहिए। But I will always use the names of the vowels, and so you'll figure out, you'll pick it up just by the use. लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं यही नाम बताऊंगा तो आपको फौरन जो है आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो आवाज है वो क्या है। It'll take a little time, but it's better than sitting down and memorizing. It's just not that important. और आप ये याद रखें कि ये आपको आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप जो है अपनी जो है वो इसको पढ़ते रहेंगे, आपके पास ये मौजूद है, तो आपको ये आ जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। Now, remember in Hebrew and Aramaic, instead of just short and long, they developed that third length, the very short. और आपको पता है कि जो इब्रानी है उसने नए जो एक और नई जो आवाज थी वो जो है उसको निकालना, जो बहुत छोटी आवाज है उसको निकालना जो है वो उसका तरीका जो है वो प्रयास किया। And so we have the very short one here. और वो आपके सामने है जो यू क्लास की सबसे छोटी आवाज है। And notice, like we saw with the other two, it's the short vowel with the two vertical dots next to it. और आपने पहले ये देखा है कि जब भी कोई शॉर्ट वॉल होगा तो उसके साथ दो जो है वो नुक्ते होंगे। Now, there's no confusion about this letter. और आपको ये जो कमात है इसकी जो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। It is always a very short O. ये हमेशा जो है हम बहुत छोटा ओ है। So it's about O. तो ये ओ, And it's called a chatef comma. और इसको पढ़ते हैं आटेफ कामा। So there are three very short vowels. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन जो हैं वो very short जो vowels हैं, one for each class. और हर एक क्लास के लिए एक। So we have the chatef commas for the U class. और हमारे पास है हटफ कामत यू क्लास के लिए। We have the chatef sagol for the I class. और हमारे पास है हटफ से गोल है आई क्लास के लिए। And then the chatef patak for the A class. और हटफ पातक है ए क्लास के लिए। So this word chatef is the very short. और हटफ का मतलब है छोटा। And all three of them, it's the short vowel with the two dots next to it. और ये सब के सब जो है ये शॉर्ट वॉल है। Now, it turns out that those two dots, और ये जो है बाद में ये निकला कि ये दो डॉट्स हैं by themselves, खुद जो है also make a vowel. तो ये खुद भी एक वॉल है। And it's also very short. और ये जो है वो भी बहुत छोटा है। But it doesn't fit into any vowel class. और ये किसी भी वॉल क्लास के अंदर फिट नहीं होता। And we call it schwa. और इसको हम शवा कहते हैं। And, oh, I can't do that again. Tell them I'm about to switch back to the other to illustrate this. और अभी जो है मैं आपको ये दिखाऊंगा टेक्स्ट के अंदर ये किस तरीके से लिखा हुआ है। That's this thing right here. ये आपको जो है इस लफ्ज के अंदर नजर आ रही है। That, the two dots by themselves ये जो दो डॉट हैं ये खुद जो है are either a very short sound, और ये इनका जो साउंड है वो बहुत छोटा का साउंड है। your mouth in its most relaxed position, and then you just make a vowel sound. और ये बिल्कुल आपने अपना रिलैक्स होकर इसका साउंड निकालना है होगा। But it sometimes means no vowel. लेकिन कई दफा इसका मतलब ये भी होता है कि ये कोई वॉल नहीं है। So for example, here,
लेकिन अभी जैसे आपके सामने ये मौजूद है, it's the Arabic sukun. It says this consonant has no vowel with it. तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सोनेंट है इसका कोई भी वॉवल नहीं है। Now, so how can one sign have two different vowels? तो इसका मतलब हुआ कि एक जो निशान है, ये दो नुक्ते हैं, ये So- दो तरह के कैसे हो सकते हैं? Here it means silent, and here it's an sound. और देखिए जब ये शुरू में है तो अह का साउंड दे रहा है, लेकिन ये उसके बाद जो है वो साइलेंट है, इसकी कोई जो है वो साउंड नहीं होगा। Well, we'll learn that next week. और हम इसको अगले जो लव वीक है इसको पढ़ेंगे इसको। Yeah, I want to go. So don't be frustrated with me. आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसको सिर्फ अभी देखें और जितना पढ़ाया जाए, आप सबके पास मैंने वो नोट्स भेज दिए, आप सिर्फ उसी हिस्से को पढ़ें तो आपको ये आना शुरू हो जाएगा और अपने साथी किसी को साथ लेके आप उसके साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते So, हैं। all right, now tell them that you're going to send them chapter 2, and that explanation is actually going to be in that chapter. और उसके बाद मैं आपको जो है एक और जो चैप्टर है वो भेज रहा हूँ जिसका नाम चैप्टर 2 है, उसके अंदर इसकी तमाम जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मौजूद है। All right, we're going to go over the last consonants in Hebrew. और आज जो है हम हिब्रू के लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वहाँ पे जाएंगे। And remember, it's the same for Aramaic. और ये अरामिक के लिए भी सेम है। All right, the letter P. और ये पै जो है पी की जो आवाज देता है। The name of the letter is Pe. जो नाम जो है इसका वो पे है। Notice with the dagesh, जब इसके अंदर दागिश होगा it's the P in pot. It's a pot तो sound. इसका जो साउंड है वो पा होगा। Without the dagesh, लेकिन जब इसके अंदर दागिश यानी जो दागिश है वो नुक्ते को कहते हैं, जब इसके अंदर दागिश नहीं होगा it's fa, like the PH in phone. तो ये फा का साउंड देगा। And again, it has a final form. और ये इसका फाइनल फॉर्म है, जब भी किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तो फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे जो हाईलाइट हुआ। And it can have the dagesh or not. It'll be pronounced the two different ways. और इसके अंदर दागिश हो भी सकता है और नहीं भी, और इसको जब दागिश होगा तो मुख्तलिफ इसकी आवाज होगी। All right. Sade, what's you pronounce it better than I do? Sa. और ये सादे है, जैसे सादका बात करें सादे स। And the final form. और जब ये किसी लफ्ज के आखिर में होगा तो इसको इस तरीके से लेंगे, जिसको हम इसकी फाइनल फॉर्म कहते हैं। Notice that all the final forms, there's just a tail that drops. आप ये देखें जब भी इसकी फाइनल फॉर्म बना रहे हैं तो ये जो टेढ़ा होता है उसको बिल्कुल सीधा बस कर रहे हैं और कोई इसके अंदर फर्क नहीं है। So we're not on the mem, but here we saw it, and the kaf we saw it. लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीम के अंदर ये मुख्तलिफ है, लेकिन बाकी हर जगह पे काफ को जो है वो टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दिया है, मीम को जो है वो पूरा एक बॉक्स की तरह बना दिया है, लेकिन जो नून है उसको भी उन्होंने सीधा कर दिया। Now, this was the original form of the consonant. और ये जो है वो कॉन्सोनेंट की ओरिजिनल फॉर्म है। But scribes, when they were writing, they would drag their pen when they moved to the next letter. That ended up curving the bottom. लेकिन जब ये हुआ एक्चुअली जो है ओरिजिनली इसको जो काफ को है जो इसे हाईलाइट किया इस तरह लिखा जाता था, लेकिन जब वो लिखने वाले थे वो बोल रहा होता था तो वो लिख रहे होते थे, या वो जैसे पहले आप फर्क दौर में है, लेकिन पहले जब लिखते थे ना लोग बहुत ज्यादा तो सामने रख के लिखते थे, तो वो स्क्राइब्स ने दरअसल यहूदी इसको थोड़ा जब लिखते लिखते टेढ़ा करते थे। So we see that here. और हम जो है रूम में भी देख सकते हैं। See it pretty clearly in the pay. This was the original form, but then they ended up dragging it. और इसी तरह पे को देख सकते हैं, लेकिन देखे बाद में हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। And the same thing on the side. और शादी के लिए भी ऐसे ही। All right. Oh. Ko. Same as you have that sound, right? Resh. और ये जो कॉफ का साउंड है ना, जैसे कैंची का साउंड नहीं है, काफ, ये वो वाला है कॉफ। The difference between a cough and a cough is a cough is in the middle of your mouth, and the cough should be in the back of your mouth, on the back of your tongue. Cough. जो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कुत्ते और जो कैंची के अंदर जो साउंड का फर्क है ना, ये वही है। Did you say? Yeah, we have that. So I explained that.
Okay, race we have. और रैश है, जैसे जो आर का साउंड आपको देगा. Same symbol, but a dot on the right and a dot on the left. अब आप देखिए जैसे we have this in Urdu. जैसे हमारे पास उर्दू में सीन और शीन है, एक के ऊपर तीन नुक्ते लगते हैं तो शेर बन जाता है, और जब तीन नुक्ते नहीं लगते तो शेर बन जाता है. ठीक है, तो ये वही है आपके सामने. So sa and sha. तो पहले जो है वो स का साउंड है, फिर श का साउंड. This last letter also shows up with a dagesh. और जो आखिरी जो लेटर है इसके अंदर भी आपको दागिश के साथ भी मिलेगा. But it doesn't make any, the dagesh doesn't affect the pronunciation. लेकिन जो दागिश है वो प्रोनाउंसिएशन को जो है अफेक्ट नहीं करता. This is ta. और इसको ट बोलेंगे. Now, originally this was ta and this was tha. जो ओरिजिनली ये ट है और ये ठ है. But that distinction was lost over time. लेकिन ये जो था वक्त के साथ साथ इसकी जो फर्क था वो खत्म हो गया. So they pronounce them both as ta. और दोनों को जो अभी जो ट बोलते हैं. All right. So now, We do have this distinction still in. right, but but those are two different letters and they indicate two different words. These are both the same letter. That's the same letter. It's just a different pronunciation. So it's almost same, just with the other accent form. Yeah. All right, we've now covered all the consonants. अभी हमने तकरीबन सारे जो consonants हैं वो सीख लिए. And so let's practice a little more और हम इसको थोड़ा सा और practice करेंगे. For the. So I'm going हमारे पास 3 मिनट है, हम 3 मिनट्स में अभी जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे. All right, so look at this one. सबसे पहले जो हाईलाइट किया है उसको देखें. That little thing is just an accent mark underneath the gimbal. Looks like an upside down Y. It's an accent mark. और ये आपको accent जो mark है वो नजर आ रहा है. There's a holum, the dot above the gimbal. और उसके ऊपर आपको देखिए holum नजर आ रहा है. And then a sagol below the mem. उसके बाद आपको sagol जो दूसरा जो है उसके लफ्ज जो है दूसरा जो हिस्सा है उसके अंदर आपको sagol नजर आ रहा है. And that vowel is O. और इसका The holum is O. जो holum की जो आवाज है वो O की है. And the sagol is E. और जो sagol की आवाज है वो E की है. And so this combined, the accent mark says we're going to stress this syllable. और जब accent mark जहाँ पे लगा है तो हमने उसकी ही ज्यादा आवाज निकालनी है. So this is pronounced gomer. तो इसको हम पढ़ेंगे gomer. With the accent on the front though, gomer. तो ऐसे होगा जैसे gomer. Now look at it in Aramaic. आए हम इसको अरामी में देखें. Remember when I told you that the vowel is long? They sometimes write it with a consonant. तो आपको शायद याद हो कि शुरू में हमने ये कहा था कि जब भी कोई वॉल लॉन्ग होता है तो उसको कॉन्सोनेंट के साथ भी पढ़ सकते हैं. Because a holum, that single dot above the letter, जब होलम है जो एक जो लेटर के ऊपर मौजूद है can be long or short. तो ये लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है. Pronounced the same way. और इसको प्रोनाउंस जो है वो एक ही तरीके से करते हैं. So when it's long though, they sometimes write it with a vav. लेकिन जब हम इसको लॉन्ग करते हैं तो इसको वाव के साथ पढ़ते हैं. And then these two, we call that combination a holum vav. तो इस कॉम्बिनेशन को हम होलम वाव पढ़ते हैं. And what's important about that is that vav is not a consonant. तो इसके लिए आप ये देखें, इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो वाव है ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है. The combination is a vowel. जो इसकी कॉम्बिनेशन है उसको हम वॉल भी कहेंगे. So this is gomar. तो इसको हम पढ़ेंगे गोमार. So go. गोमार. All right. It's 9:30. Why don't we call it a break? Yeah. Have them read chapter 2. And it's more on the vowels and the consonants, a little more detail. Okay. तो अभी जो है मैं आपको वो जो है दूसरा जो चैप्टर है तो दूसरा जो चैप्टर है मैं अभी आपको भेज रहा हूँ. ठीक है, तो आप उसको देखें. और अच्छा, आज की जो है वो क्लास खत्म हुई.
बहुत ज्यादा आपको ये अजीब नजर आ रहा होगा, आवाजें आपको वही नजर आ रही होगी क्योंकि हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जो है अल्फाबेट से हमारी आवाजें तकरीबन जो है वो वही है, दिखने में भी तकरीबन वही है, थोड़े बहुत जो है उनकी शेप चेंज है, ठीक। ये बिल्कुल जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इसको जो है पढ़ें, प्रैक्टिस करें। आप सब एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आप जो है इसको कर सकते हैं, या आप अपने जहन में रखते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आज हम क्लास खत्म करते हैं और जो है आप